In question number 6, you can see what is given data. See, front view is below xy, top view is above xy. So what it means? It means that ये जो views दिए हैं, those views are in third angle. ठीक है, हमने देखा था फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल. तो फर्स्ट एंगल में क्या रहता है? फ्रंट व्यू इज अबव एक्स वाई, टॉप व्यू इज बिलो एक्स वाई. और साइड व्यू क्या रहता है? इन केस ऑफ थर्ड एंगल, लेफ्ट हैंड साइड व्यू विल बी ऑन लेफ्ट साइड ऑफ फ्रंट व्यू, राइट हैंड साइड व्यू विल बी ऑन राइट हैंड साइड. ठीक है, जैसे फर्स्ट एंगल में कैसे होता है? फ्रंट व्यू के साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू विल बी ऑन राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड व्यू विल बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड. ये कहाँ पे रहता है? इन फर्स्ट एंगल. बट इन थर्ड एंगल इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट. ठीक है, एंड टॉप व्यू इज अबव, फ्रंट व्यू इज बिलो. ठीक है, व्यूज विल रिमेन सेम, व्यूज में कोई चेंजेस नहीं आने वाले. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रंट व्यू कहाँ पे है? बिलो. तो फ्रंट व्यू में क्या दिखता है? लेंथ. हियर वी हैव ओरिजिन. ठीक है, ओरिजिन ओ वी ऑलरेडी हैव. तो दिस इज माय ओरिजिन. ठीक है, ओरिजिन यहाँ पे ओरिजिन दिख रहा है आपको? यू कैन सी दिस इज माय ओरिजिन. ओरिजिन के कौन से साइड पे है फ्रंट व्यू? ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे. सो ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज हाउ मच? 110. Length is 110. Height of object is how much? 65. So this is height of object 65. And width of object, you see top view में दिखता है ना, length by width. So this will be my width. ये width कितना है? 60 mm. So this width becomes 60 mm. So using length, width and height, I have drawn this rectangular box as usual, like previous problems. ठीक है, तो ये once you get this box, ठीक है. Now next task is what? Front view में क्या देख सकते हैं? This L shape we have. ठीक है, दिख रहा है सबको? Okay, so let us start. कैसे? This line is shown by object color. ठीक है, take a line. अब कहाँ से? यहाँ से कितना ऊपर जाएंगे? 15 mm up, going up. Ortho mode should be on. 15 mm, enter. Then it is F5. It is going in this direction. How much is the length? अब लेंथ देखो कितना रहेगा. ठीक है, you see this top face सेंटर में ये कितना है? 20 mm. ठीक है, और ये विड्थ दिया है क्या? दिस वन ये दिया है. दिस लेंथ इज नॉट गिवन ना. यू सी यहाँ पे हाइट पता है हमें. ठीक है, वी हैव हाइट. ये विड्थ दिया है क्या? नहीं दिया है. सो हाउ मच इट इज? लेट अस प्रेडिक्ट दैट डायमेंशन. आई विल मॉडिफाई, यू डोंट वरी. ठीक है, सो लेट अस से दिस विड्थ इज 60 and 50. Let us say this width is 50 mm. This one. ठीक है, this width, this to this width is 50 mm. Okay, so what we will do, remaining is 110 minus 50 is, this one will be 60. You see, so this line will go in this direction. 60, enter. ठीक है, why 60? Because what we have assumed, this one, this to this distance, ये distance कितना है? 50 mm. ठीक है, हमने कितना लिया है इसको? 50 mm. Okay, so what we will do, at this point I will go vertical. Repeat line again, from this point I will go vertical. ठीक है, I'll join this. ठीक है, ये शेप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. You see, at midpoint of this line, this is my midpoint. ठीक है, at midpoint what we need to do, I will remove this first. ठीक है, this center is, at center it is 20. So on either sides it is how much? 20, 15 and 15. On this side it is 15, on this side it is 15. So how one can draw? You see, ठीक है, on this side it is 15, enter.
repeat. On this side it is again 15, enter. Okay, now you can see, now this height is how much? Total is 65. Okay, then this thing is, you see, this one is how much? This is 25. This thing is 25. Okay, so how we get it? At this level you can go vertical 25, enter. Okay, we have endpoints now. So what we can do is we can join this like this. Okay, in similar way, this level will go in this direction, same height now. Again, I'll join this with this one. Now once we have this, इसको हम क्या कर सकते हैं? We can delete this. ठीक है? First of all, this one. Now we will go, once we have this shape, ये shape एक बार आ गया, तो next task will be what? Next task will be just to add the width. ठीक है? ये shape तो आ गया. What next is? Next thing is to add width. ठीक है? Width कैसे add करेंगे? देखो, you see, take a line. Now F5 to change the plane will go in this direction. कहाँ तक जाएगा? Up to this. ठीक है? Repeat line. This will go in this direction. ठीक है? Then this thing, you see, width कितना है total? Total width is 60, 60. Enter. One sec. You can see from this point I will go in this direction. कितना? 60. Enter. ठीक है? Repeat line. Again from this point. अब ये हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखो, you see this one, this thing. Right click, copy selection from this point to this point. आ गया. You see, you can copy the shape also. Directly you can copy. Okay, so this thing is completed. Then this one I will join. Excess length I will trim. Okay, now the only base is remaining. Okay, how we get it? Select this, right click, copy from this point to this point. आ गया. Now only thing is to join this. Okay, you see. Okay, now here we have center line at the midpoint of width. इसका मतलब क्या? Object is symmetrical about width. So where we have width, you see, from this we'll go like this. You just join all midpoints there. You see, just join all midpoints. Okay, and this center line will be shown by match properties. Show it by center line only. You see, this is center line, or you can say line of symmetry. This is my line of symmetry. So up to so far, this L shape I have drawn and I have added width to it. ठीक है, उसको width ऐड कर दिया. Okay, what next is, यहाँ पे अगर आपने देखा तो क्या दिखाई दे रहा है टॉप व्यू में? इट इज नॉट स्क्वायर और रेक्टेंगल. ठीक है, यहाँ पे इस तरह का शेप है. ठीक है, कैसा है ये शेप? यू सी, ये सेंटर में, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है? 12 mm. ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस इज 12. ठीक है, from this side distance is 12 mm. So let us see, and this one, this distance is how much? 22. ठीक है, तो ये कैसे कर सकता है? ये लाइन को मैं डिलीट करता हूँ फॉर टाइम बिंग. ठीक है, यू सी कैसे, ये डायरेक्शन में कितना जाएगा? 22. एंटर.
then in this direction it will go how much? 12. Okay. Okay, so once you get this, what next? We will get it on one plane, और बाकी दूसरे plane पे हम लोग क्या कर सकते हैं? We can copy it directly. You see, ठीक है? So this is not there. This is again not there. Okay, so this once you get this one, ये मिला. Now this from center it is how much? 16 mm. So 8 mm on either sides. You see, on this side it is 8 mm. Repeat, on this side it is 8 mm. Okay, now once we have this, ये 8 mm हो गया. ये अंदर कितना जा रहा है? 20. You see, it is going inside. Repeat line, it is going inside in this direction. How much? 20. Enter. Okay, in similar way on this side will there will be a same line. So what we will do, we will copy selection from this point to this point, and this line is nothing but this is the center line. You see, so you can change properties for the same. You see, okay, now once you have this center line, okay, now once we have this, यहाँ पे क्या है? Semicircle. You see, semicircle we have, so we need to go to ellipse. Ellipse में isocircle, same plane है देखो. You see this thing, or remaining semicircular part you are supposed to trim. And once we have this, what next? इसको join करो. ठीक है, ये तो हो गया. Now ये इसका लेवल कैसे अचीव करेंगे? You see, इसका जो लेवल है वो कैसे अचीव करेंगे? दिस डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस कितना है? यहाँ से डिस्टेंस इज 12 mm. ठीक है, देखो यहाँ पे, यहाँ से डिस्टेंस कितना है? 12. एंटर. ठीक है, और ये जो लेवल है, दिस लेवल यू सी, कौन सा? ये वाला. दिस लेवल विल बी हियर. दिस डिस्टेंस बिकम्स 22. तो इसको हम ज्वाइन करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ठीक है, ज्वाइन तो हो गया, तो इसका कुछ मतलब नहीं बनता. ठीक है, ओके. नाउ वंस वी हैव ऑल दिस, यहाँ से F5, you are supposed to have vertical lines. Repeat line, यहाँ से vertical आएगा. Repeat, यहाँ से आएगा vertical. ठीक है, then this is not there. You see, again line, draw vertical. ठीक है, now once we get all this, what next? This one, I joined this. Now ये shape है ना इस तरह से, तो here we will be having plane. You see, vertical, repeat line, join from this point to this point. आ गया, और जो भी एक्सेस लाइन है, ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? वी कैन ट्रिम दिस. ओके, तो जो एक्सेस लाइंस यू कैन ट्रिम like this. Here line doesn't exist. For this, again, this doesn't exist.
Okay, so you can remove it also. अगर नहीं रखा तो भी चलेगा. We don't need it at all. You see. Okay. Now once we have all this, the next part will be what? Okay, this shape. Now ये shape ऐसे अंदर जाएगा ना? You see this one. This I will copy selection from this point to this point. अब कितना अंदर कितना दिखेगा देखो. ये slot में जितना आ रहा है उतना visible होगा. That much part will be visible and remaining is not visible. तो वो मैंने निकाल दिया. Okay. Now you see I had this shape in top view. Okay. Now once we have this L shape is completed, this shape is completed, this dotted. Only thing remaining is this slot. Here you can see slot का depth कितना है? From this depth is 15 mm. Depth is 15 mm and it is there on this slant surfaces. It is there on this slant surfaces. तो कैसे आएगा? देखो very simple. यहाँ पे ये width कितना है? 20 mm. तो क्या करना पड़ेगा मुझे? एक लाइन खींचना पड़ेगा यहाँ पे. एक लाइन खींचा मैंने. ठीक है. इसको कॉपी सिलेक्शन यहाँ से ये डायरेक्शन में कितना 10 एंटर अगेन कॉपी सिलेक्शन अगेन ये डायरेक्शन में कितना 10. ठीक है. तो यहाँ पे स्लॉट आने वाला है. ठीक है. नाउ डेप्थ ऑफ स्लॉट इज हाउ मच? डेप्थ ऑफ स्लॉट इज 15 mm. तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे ये मिड पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा. लेंथ कितना रहेगा उसका 15. खींच लिया. ठीक है. नाउ दिस लाइन टू बी ट्रांसफर्ड ऑन दिस प्लेन. ये प्लेन पे कैसे ट्रांसफर करेंगे? टेक ए लाइन this F5 to change the plane. ठीक है. ये डायरेक्शन में आए. ओके. ये डेप्थ हो गया. ये क्या हो गया यहाँ से 15 mm फ्रॉम दिस सेंटर. यहाँ से ये इतना डिस्टेंस क्या हो गया 15 mm. लेकिन स्लांट पे कैसे आएगा? when you draw this line ऐसे ये डायरेक्शन में. ठीक है. once you have this, what next? Next task will be take a line from this point F5. You will have projection in this direction. You see. Okay. Now once you get this, next task will be what? Next task will be to draw a line. इसको क्या करेंगे? Copy selection from this point to this point to this point. ठीक है. अब ये slot देखो कहाँ तक आएगा. Axis line you can trim. See, this is axis line. This thing is axis line. This is axis. ठीक है. तो ये सब होने के बाद कैसे ड्रॉ किया वो शो करने के लिए I will show it by faint color line. Again, this line also. This line is also shown by faint color. You see. Okay. Now once you have this lot, यहाँ पे सेंटर में कुछ लाइन है क्या? नहीं. You see. यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या? नहीं. Okay. अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या ये सब निकाल दिए. Okay. Now ये similar shape. ठीक है. ये जो horizontal line है. ठीक है. Which we have here. तो that line you will get it easily. कैसे? Let me extend this line first. Okay. So this what I will copy is this one. This line I will copy selection कहाँ से? From this point to this point. You see similar shape है ना ये. ठीक है. और ये लाइन में कॉपी करूंगा. इसको राइट क्लिक कॉपी सिलेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. आ गया समझ में? ये शेप आ गया. अभी ये जो एक्स जिसको क्रॉस कर रहा है दैट मच पार्ट आई विल ट्रिम. वन सेक. ठीक है. तो ये दिस इज माय ऑब्जेक्ट लाइन. You see this slot is going throughout and again this thing ये जो extra line है you can trim this. I think ये touch नहीं हुआ है यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा?
extend. ओके, यू कैन ट्रिम। और उसके बाद क्या, ये ऐसे ही पैरेलल लाइन बैक साइड आएगा, तो क्या करूंगा मैं, इसको राइट क्लिक, कॉपी सिलेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट टू, यू सी दिस पॉइंट, और इसको क्या करूंगा मैं, ट्रिम। ठीक है, तो दिस विल बी माई स्लॉट, यू सी, यू कैन सी दिस इज माई स्लॉट। आ रहा है समझ में? Now once we finish with the object, once we finish with the object, now next task will be what? To put dimensions. ठीक है, और dimensioning कैसे करते हैं? Let us see. Dimensioning part is quite important part. कैसे करते हैं? Use align dimension. ये देखो, कहाँ से? From this point to this point. ये कितना distance है? 110. ठीक है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, this much distance is 12 mm. You see this one. ये कितना है? 1 sec. हमेशा अलाइन डायमेंशन ही यूज करना है। आ रहा है समझ में? तो ये दिस पार्ट इज 12, ठीक है, देन this much is 16, you see this thing is 1 sec, align dimension 16, okay, then again this back side it is going how much, this one is 12, ठीक है, तो वो एक्सटेंड करके यहाँ पे हमने ऑलरेडी मिटा दिया है, तो दिस थिंग इज 22, यू सी, कौन सा वाला, ये डायमेंशन, तो कैसे आएगा, यू सी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक ए लाइन, यू आर सपोज टू एक्सटेंड इट, रिपीट लाइन, extend, and parallel distance between these two, parallel distance between these two is nothing but from this to this, no, you see, parallel distance between this point and one sec, यहाँ पे ऑलरेडी लाइन खींचा हुआ है ना, this one, this distance is 22, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, लेट मी शो इट बाय फेंट लाइन। तो ये सारे डायमेंशंस देने के बाद अभी ये टेढ़े मेढ़े दिख रहा है ना, ठीक है, व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू अलाइन, ठीक है, और अलाइनमेंट कैसे होता है, यू सी, अभी ये मुझे चाहिए इसको पैरेलल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना इसको पैरेलल या वर्टिकल, तो ये कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे लाइक दिस, ठीक है, और क्या बोलेंगे यहाँ पे, DIMEDIT, डीमेडिट कमांड यूज करेंगे, एंटर, डीमेडिट यूज करने के बाद हम क्या बोलेंगे इसको, ऑब्लिक, ऑब्लिक पे क्लिक करना है, ठीक है, वो डायरेक्टली ऑब्लिक एंगल पूछेगा, अभी ये मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वर्टिकल, वर्टिकल मतलब एंगल कितना रहता है उसका 90, यू सी, इट विल बी लाइक दिस, तो आप ये डायमेंशन देख सकते हो, ठीक है, तो इसको इस तरह से पैरेलल डायमेंशंस आप दे सकते हैं, तो यू कैन शो इट बाय सम डिफरेंट कलर, ठीक है, इन सिमिलर वे, अब अभी ये अगर इसको पैरेलल चाहिए तो डायमेंशन एडिट कमांड यूज करके अगेन गो फॉर ऑब्लिक, ऑब्लिक, select object, this is my object, okay, enter, it is asking for angle, अब इसका एंगल कितना है, 30 डिग्री, ये देखो ये लाइन को पैरेलल चाहिए, तो इट इज 30, हो गया उसको अलाइन, यू कैन चेंज कलर फॉर दिस, ठीक है, तो in this way you can put dimensions, got it, सिमिलरली फॉर सर्कल्स, अगर सर्कल को देना है तो अभी ये क्या है, दिस इज इलिप्स,
ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, डायमेंशंस में जाके गो फॉर मल्टी लीडर। ठीक है, आप इसको इस तरह से, अभी ये मल्टी लीडर, ठीक है, यू कैन चेंज प्रॉपर्टीज, एरो साइज यू कैन चेंज 7 सपोज 3 mm। ठीक है, ये एरो आ गया। उसके बाद ये जो लाइन है इसको मैं क्या करूंगा, आई विल एक्सटेंड इट लाइक दिस। ओके, वंस आई गेट एरो, ठीक है, अगर मल्टीपल सर्कल्स है तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो उसको। एक सेकेंड, ये एरो को खींच के आप उसको लिखने के लिए जगह बना सकते हो। और यहाँ पे मुझे क्या पुट करना है, यू सी दिस थिंग, उन्होंने डायमीटर दिया नहीं था, ये डिस्टेंस दिया है ना 16, लेकिन अगर उन्होंने डायमीटर या रेडियस दिया है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, गो फॉर टेक्स्ट। ठीक है, कितना, सपोज कैपिटल आर 15। ठीक है, और इसके केस में कितना है, आर इज 8। ठीक है, सो वेर एवर सर्कल्स आर देयर यू कैन पुट डायमेंशंस लाइक दिस, क्योंकि एज इट इज ड्रॉन बाय एलिप्स आइसो सर्कल, तो ये अगर आप इसको डायमेंशन देने भी जाओ सर्कल के, सर्कल पे क्लिक करके, तो इट विल नॉट टेक, क्योंकि इट इज नॉट ए सर्कुलर आर्क। 3D में ये एलिप्टिकल आर्क होता है। आ रहा है समझ में? तो इन दिस वे यू कैन पुट ऑल द डायमेंशंस, सिंपल। तो ये हो गया अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सो यू कैन पुट ऑल डायमेंशंस इन सिमिलर वे। ठीक है, ये कंप्लीट हाइट दिया है, ठीक है, ये कंप्लीट हाइट दिया है तो कैसे कर सकते हो, ठीक है, यू कैन टेक लाइन यहाँ से, ऑर्थो मोड शुड बी ऑन, F5। ठीक है, repeat line, F5 in this direction. Now you can put dimension like this between this and this, you see, one sec, take dimension कहाँ पे, between this point and how much it is, 65। ठीक है, तो ये डायमेंशन किसके साथ अलाइन करना है, इसके साथ, ये लाइंस के साथ। ठीक है, तो ये डायमेंशन को आप क्लिक करोगे, ठीक है, क्या बोलोगे, डीम एडिट, ठीक है, ऑब्लिक क्लिक करना है, और एंगल कितना है इसका, अभी ये जो एंगल दिख रहा है कितना है, वो -30। आ रहा है समझ में? ठीक है, यू कैन चेंज प्रॉपर्टीज, और एक एक डायमेंशन के लिए करने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल डायमेंशंस एंड, मतलब एक प्लेन में जितने डायमेंशंस आ रहे हैं ना, वो सारे डायमेंशंस आप एक साथ सिलेक्ट करके उसका एंगल चेंज कर सकते हो। सो इन दिस वे यू कैन पुट डायमेंशनिंग। ठीक है, दिस इज कॉमन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, इन सिमिलर वे यू विल बी डूइंग।